ओके पिले टिके कन्फर्म करदे ऑडियो क्लियर आछि गोटे सेकंड मते समय दो खाली मेडिसिन खाइ दोछि तापर स्टार्ट करबा परफेक्ट सुगन्धित सुन्दरी माधव चन्द्र सहोदरी हे मम मुनिगणवन्दित मोक्ष प्रदाय मंजूभासि पंकजवासि देवचितो सद्गुणवस्य शान्ति जय जय हे मधुसूदन ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ଏବେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା ମନ ଅଛି ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଏତେ ମେସେଜ କରୁଛି ଏତେ ଓକେ ପଛରେ ଦେଖିବା जी मेसेज करछि पछे देखि त मेसेज परफेक्ट ओके अगेन नमस्कार प्रणाम जय जगन्नाथ समस्त प्रणाम समस्त प्रणाम मिस्त्री प्रणाम सत्यजित प्रणाम जेके प्रणाम स्वराज प्रणाम आर्या प्रणाम पूजा समस्त प्रणाम अब ठीक स्टार्ट करबा आज क्लास सेकंड प्रीवियस क्लासेस हम डिस्कस करूथिले पॉलिटिकल साइंस रो लोकल गवर्नेंस ऊपर 73rd एंड 74th ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कस करि सारछि हम ऑलरेडी देन आज कैसे फेडरल डायनामिक्स एंड कमिशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस पर डिस्कशन करिबा ओके सेंटर स्टेट रिलेशन 7 शेड्यूल स्टैंड इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352 356 360 एंड या ऊपर प्रोविजन फिर हम डिस्कस करिबा आज क्लासेस अगेन स्टार्ट करिबा आज क्लासेस को समझते रेडी सेकंड रेडी ना कोन कोजो को प्लान सुमन सुमन अरे कौन ये पिला ब्लॉक कर दी व्हाट्सएप रे ठीक लागिबो सारा गीत गाए मु जानि नि किछ तमन तो एमितिर सुनि देइथु आ मु बोलुतली जस्ट तमन सुनि देइथिबो से नै कहउछ कमेंट मारी नै कमेंट मारी सिते कहउछ हो माडो आसो माडा हो तम मना पर हो ठीक है अगेन आउ टाइम वेस्ट करबानी स्टार्ट करिया हम आज क्लासेस माइक अंतला रे मु देखिनी
ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେପଟ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଆସିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜିର। Okay, then which article empowers the parliament to legislate on a state list subject if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority? କହିଲ ସତ୍ୟଜିତ, ମୁଁ କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି କହିଲ, ଯଦି ଶୁଣିଛ? ଶୁଣି ନଥିବ, ଏତେ ଜୋରି ଏତେ ଦୂର ବି ମାଇକ୍ ଶୁଣା ହଉନଥିବ। ମୁଁ ଡୋର ପାଖରେ ଗାଇକି ଆସୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ। ହେ ଭଗବାନ, ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲି। ଭଗବାନ, ସୁମନ ସୁମନ୍ଦିତ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଧବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସହୋଦରୀ ହେମମୟ, ସେଇଟା ବୋଲୁଥିଲି। ମୁନିଗଣ ବନ୍ଦିତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାସିନୀ ଦେବନତି। Perfect. I'm going to say 249 is for answer. Suppose now Article 249 empowers the Parliament to legislate on a state list subject if Rajya Sabha passes the resolution supported by 2/3 members of the President and voting. Under which article does Parliament have power to legislate on state list subject during a national emergency? कॉमेडी बनै सारे मोर नहीं गीत दौच मत गाइक कौन ताको कहती ठीक से बाजा वाला बनै सारे मत बाजा वाला बनै दे मत गाँ भजन मंडली बाजा वाला। Oh, Article 250 is for answer. It empowers the Parliament to make laws for the whole or any part of India and with respect to any of the matters enumerated in the state list while a national emergency is in operation. है Okay, so statement question Article 352 national emergency पर statement question जल्दी से आंसर दे दियो। कौन जी इतने जोर गरम होची, गुड़गुड़ी जोर होची। प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाथ हाने करूछ रे, हाथ हाने करूछ। अच्छा काली स्टोरी कहलेनी, स्टोरी कहलेनी, वेट करके पढ़ेली। काली स्टोरी कहनी कहिछि, काली स्टोरी कहिछि। हम सब सेटिंग करी भगवान प्रॉपर भजन मंडली बनी साराणी मत नहीं। काली तो स्टोरी केते स्टोरी टेलर करूछ, नैरेटिंग केते करूछ, भजन मंडली बने दोछ, केते सार कहूछ, कौन बुझबे। नो स्टूडेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज़ पार्लियामेंट्री approval must be obtained within 1 month, not 2. है नहीं भगवान। Which article deals with the imposition of president's rule states due to failure of constitutional machinery? जो इसमें आंसर तुम कॉल आंसर दो। ओके स्टार्ट करी बात। हम ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर सकते। ओ हम तो ऑलरेडी क्लास से स्टार्ट करिया पुणी कोन। ओ सी 356 इज फॉर आंसर पद प्रश्न को जिबा। ओ सॉरी ओके आउट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट रूल 356 ऊपर President rule maximum time money for state. Perfect, very good. वर्षा हो ना आज पुणी गुड़गुड़ी चलने भगवान। काली स्टोरी कही काली भल भल स्टोरी 3 ରୁ 4 शुणी सब ठक छाड़ू ना मत। स्वराज तो मत हैरान करुच्ची फोन करी। So financial emergencies provides a provision under which article of the Constitution?
स्वराज गोटे कॉल कर हरण कर बदमाश थी बदमाश वेरी गुड आर्टिकल 360 कहूँ हाँ नहीं प्लीज which list in 7th schedule contains a subject like banking, defense and foreign affairs. गुड मॉर्निंग सर सर मु भल सूरज माड़ भल नुहे ताली मु काम कर यूनियन लिस्ट परफॉर्मेंस प्रदर्शन को स्पीड अप जा पे ठीक अच्छे यूनियन लिस्ट 1 कोच ऑफ द 7th schedule contains the matters of national importance like defense, banking and foreign affairs. Residuary power of legislative matters not enumerated in any list are vested in whom under article 248. चौदह सौ 8 नंबर प्रश्न में अच्छे परफेक्ट वेरी गुड हम कहे पार्लियामेंट अंडर है ना नहीं 248 वेस्ट रेस्टोरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन matters not in any list exclusively in the parliament of India माने जो बाकी जो आईन गुड़ाक रहीगला माने आईन प्रणयन करने पावर गुड़ा रहीगला ताकू सब देदेले कहा अंडर को आर्टिकल 248 अंडर देदेले सांसद अंडर को संसद अंडर आर्टिकल 262 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द adjudications of the disputes relating to ये ठंडा लगे परफेक्ट आम कहे इंटरस्टेट रिवर वाटर्स परफेक्ट Article 262 provides for the adjudication of disputes relating to the waters of interstate rivers or valley जोटा हमें कहे provision for establishing an interstate council by the president is enshrined in perfect. Article 263 empowers the president to establish an interstate council to coordinate policy and resolve disputes between states. Okay, statement question article 358 and 359 ऊपर statement question अरे 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 गोटे कुली शुआ बस सीट पाखे गच गोटे पिजुड़ी मो पिजुड़ी खाई गले ओनली 1 is the perfect answer जो मैंने 1 दीजिए perfect अच्छे मैंने स्टूडेंट 1 is correct and 2 is incorrect because article 359 requires a specific presidential order cannot suspend article 20 and 21 है ना नहीं पहले मैंने perfect how which article imposes say duty on the union to protect every state against external aggression and internal disturbances फोटो उठी दिंतु सर नहीं नहीं फोटो उठी हेनी बा मैंने पुणी पुणी टाइम जीव तो जीव से उठी पड़ेब से बस चुपचाप खाऊ पिजुड़ी गछ भर फसिक लुचिक सब खाऊ आर्टिकल 355 इज द परफेक्ट आंसर प्रश्न को जीवा हाँ परफेक्ट पर प्रश्न को Parliament can legislate for 2 or more states by consent on a state list matter under which article 413 नंबर प्रश्न में स्पीड अप जा पे जिते जल्दी आंसर दे दबो ताकू धरिक रखि सुआ सब को चला तुमको ताको रखिबो रखिबो नि फर्स्ट पड़े तुरंत आर्टिकल 252 इज द परफेक्ट आंसर प्रश्न को जीवा हां to members the parliament to legislate for 2 or more states on a state list matters if legislation is passed by the legislatures which article deals with the legislation for giving effect to international agreements and treaties जोटा हम करछे ओके चार्ज रो काटी दबा भलो ओडी आसबो इंग्लिश ऑटो ट्रांसलेट हे होछ पूजा से बडा
ऑटो डबिंग भी ऑन हो जाउतला चैनल मु ऑटो डबिंग बंद कर दी सेटिंग रु नले ऑटो डबिंग भारी विरक्ति लागिवो माने हठात जने फोन ओपन कर ताको हिंदी रे सुना जिवो नडा बेंगली सुना जिवो भारी विरक्ति लागिवो 53 इज द प्रोपर आंसर Article 253 point pass Parliament to make any law for implementing any international treaty agreement or any convention for whole or any part of India. Second question, Article 254 inconsistency of laws. चौदह सौ पंद्रह न प्रश्न परफेक्ट आम कहे बोथ ना नहीं पे परफेक्ट Article 254 under how which list in 7th schedule contains the subject like education, forest, marriage. कारे पे समस्त पूरा स्टोरी सुनी कि शांति रे पूरा टक टक कर सब सोइछ नहीं देखी भी खाली कहार कम मार्क आसु गाड़ी गोटे तो बाहर जीवनी गाड़ी गोटा बाहर पावनी मानक ऊपर सब गाड़ी दियो चलो 16 प्रश्न थे कनकरेंट लिस्ट इज द परफेक्ट आंसर परफेक्ट हो कनकरेंट लिस्ट 3 जोटा हम कहूँ ऑफ द 7th शेड्यूल कंटेंट सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन फॉरेस्ट मैरिज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन रिलेटेड परफेक्ट क्वेश्चन बुझा ग्रांट इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स आर गवर्नड अंडर 14 प्रश्न में अच्छे को स्टोरी सर मु नथिली बोधे सत्य भगवान 10 टाइम रे उठिली हाउ Article 275 is the correct answer for this question. How Article 275 provides for grant in aid from the Consolidated Fund of India to such states or parliament may be determined to be in need of assistance है ना नहीं 275 अनुଯାयी केंद्र सरकार आवश्यक करुवा राज्य गुड़ी विशेष अनुदान प्रदान करें पश्चात स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी रिवोकेशन कही आर्टिकल 52 प्रणाम प्रणाम मिस्ट्री देह सेमती मो देह आज यूजुअल सेमती पे माने ना भलो ना खराब पूरा मझिया मझी रही जाइए हौ माड़ माड़ हम तुम मान निदर कर दौच both statement are correct under Article 350 regarding presidential revocation and Lok Sabha disapproval resolution कौन कही proclamation of emergency may be revoked by the president at any time ठीक अच्छी हाँ नहीं Lok Sabha can pass a resolution disapproving emergency by a simple majority compelling revocation. Which Unit Act replaced internal disturbances with armed rebellion in Article 352 1419 प्रश्न আছে अच्छा देख कि बोथ ऑप्शन के तुम सब रॉन्ग प्रूफ हम हाँ 44th अमेंडमेंट समस्त जानी तो 44th Constitutional Amendment 1978 replaced the term internal disturbance with armed rebellion is the as a ground for national emergency for the financial emergency under Article 360 has been proclaimed in India. Very good. Ete offer to 9 billion offer honi. Never in the history of independent India. Heiji kebe financial emergency kebe heiji? Ei financial emergency under Article 360 has never been proclaimed in history of India. Which article prohibits imposition of taxes by states on electricity sold to or used by the central government? 14 क्वेश्चन प्रश्न আছে हाउ आर्टिकल 287 जो मैंने आंसर दीजिए परफेक्ट आंसर अच्छे प्ले मैंने प्रति आर्टिकल 287 prohibits states from imposing taxes on the consumption of sale of electricity sold to the central government. Consider statement regarding administrative relations by Article 256 to 263.
ମୁଁ ମେଡିସିନ୍ସ ଖାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ପେଟ ପୁରା ଦରଜ। ମୁଁ କଥା ବି ଅଧିକ ଜୋରରେ କହିପାରୁନି। ଗଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଗଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଅପସନ ଠିକ୍ ମତେ ଟିକେ କହିବ? କୋଉ ଅପସନ ଟା ତମେ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଥ ଦେଖି ମାରିଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ। ଯୋଉମାନେ ବୋଥ ଦେଖିକି ମାରିଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଢାବା ମାରିଛି ସାର୍ ସତ କହୁଛି। Only one. State executive power must be exercised to ensure compliance with parliamentary laws. ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ପାୱାରଟା, ନାଇଁ କି ଯେ ମୁଁ କହିବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ପାୱାର, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। नो। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟିକଲ 256 statement 2 is incorrect because the center can issue administrative direction under normal times to article 256 and 227 ନେବେ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ, କେବଳ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କହିଛି ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ବି 257 ଅଣ୍ଡରରେ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ୱାନ୍ଟା ଯଦି 256 257 ଅଣ୍ଡର ହେଇପାରିବ। which commission was appointed in 1893 to examine center state relations। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟାଞ୍ଜଳି। ହଉ 1423 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପରଫେକ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲ। ସରକାରିଆ କମିଶନ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣ 1983 under justice are a sarkaria है ना नहीं examine and review center state relations। perfect। which article? oh so which article provides that no tax are paid or collected except by authority of law। uff पेट साइड पर दर्ज। गुड मॉर्निंग सर खाली बफर हो भगवान। गुड मॉर्निंग देवराज। perfect। article 265 is the perfect answer। but those no jiba hard asla bode 265 mandates that no tax shall be levied or collected except by authority of law। constitutes a statement regarding the article 356 president's rule। परफेक्ट वेरी गुड। ओनली वन। समस्त भूल मार दीच जानी सब भूल मार सब माने आखि बुझी डेउछ सब बोध को ना सब आखि बुझी नहीं पड़ मुझे ठीक जो मैंने ठीक देच बहुत बढ़िया परफेक्ट पे एक्सीलेंट ठीक अच्छे। हाँ statement 2 statement 1 is correct but statement 2 is incorrect because judicial review of president's rule is permissible as established in SR बोमाई केस जोटा राष्ट्रपति शासन समय विधानसभा भंग हो पारे और यार न्यायिक समीक्षा हो पार तेणु केवल एक ही सठिक है ना। सरकार कमिशन 893 recommended that the governor should normally be 1424 प्रश्न में अच्छे।
वेरी गुड आम कहे एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट परफेक्ट प्रश्न को जी सरकार कमिशन recommend that the governor should be an eminent person from outside the state and not active in local politics. Under which article is the Finance Commission of India constituted? किसो एते बफर देखो मिस्ट्री जो बफर हूँ गोटे काम कर नेट ऑफ कर ऑन कर ना नेटवर्क सेटिंग को जीव सेटिंग को जाए नेटवर्क सेटिंग को जीव रीसेट कर नेटवर्क सेटिंग को Article 280 is the proper answer. ठीक है mostly ठीक है Article 280 provides for the constitution of finance commission by the president every 5 years जोटा कहे पंची कमिशन जोटा कहे पुंची कमिशन ठीक अच्छे 2007 primarily focused on examining very good सेंटर स्टेट रिलेशन इज द परफेक्ट आंसर हारीगली देखो हारीगली of the Panchi Commission cell set up in 2007 to look into the new issues of center state relation. Article 261 of the Constitution requires full faith and credit to be given throughout India to which? Perfect public acts, records and judicial proceedings of every state. Perfectly. Article 261 and to set up full faith and credit shall be given throughout India to public acts, records and judicial proceedings of every state. जोड़ा okay. Statement question regarding the concurrent list. Both parliament and state legislature can make laws on the concurrent list items. Very good. ठीक अच्छी. In case of repugnancy, state law always prevails over central law. Nope. concurrent subject जदि conflict थाए सेंट्रल स्टेट रो कौन माने सेंट्रल कौन करिवो स्टेट लॉस गुडा को प्रिवेल्स करिवो ना कि स्टेट करिवो होना नहीं जो माड़ा माड़ा तो मन दरकार Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect because central law prevails over the state law in case of conflict on concurrent subject. Very good. Oh. Move back saying go platform. ठीक है. Under Article 359, which fundamental rights cannot be suspended during a national emergency? Very good. Article 20 and 21. Life and liberty money right to privacy act. Article 39 expressly states that the enforcement of Article 20 and 21 cannot be suspended even during a national emergency. A proclamation of national emergency must be approved by parliament within 632 प्रश्न माडुआ सब ठक सब तमाने नहीं तमान यदि माने न पाठ पढ़ो तुम मक टेस्ट कले ही तुम धरा पकड़ पड़ो जार कम मार्क रही मक टेस्ट तुमको स्टोरी बंद कराब तो हो Article 354 because of proclamation of national emergency to be approved by each house of parliament within 1 month. Which is constitutional amendment to transfer education from the state list to the concurrent list. तुम मक टेस्ट ताले मते आउ किछ उपाय ही नहीं तुम धरियो गेले गोटे उपाय मो पारे तुम मक टेस्ट न पड़ो देख तुम मान माड़ कौ रेट तुम ठीक हम 40 सेकेंड से कौन कही पढ़ल क्यों संशोधन आईन शिक्षा को राज्य तालिकार समवर्ती तालिका को स्थानांतरित करथिला ट्रांसपोर्ट एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट
गाड़ी गाड़ी खाइबो ना माड़ खाइबो को pursuant constitutional amendment 1976 stand for 5 subjects including the education forest from the state list to the concurrent list perfect प्रश्न को जिबा under article 357 the executive power of the state shall be so exercised as not to impede which very good the executive power of the union perfect 257 mandates that the state executive power must be exercised so as not to impede or prejudice the executive power of the union. How? Consider statement regarding the interstate council. Very good. अच्छा ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର ଦେବ ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର ନଦେଲେ ଗାଳି ଗୋଟେ ବାହାର ଯିବାନି अच्छा both 1 and 2 it is established under article 263 yes it is a permanent constitutional body set up by presidential order bilkul interstate council it was and it is a permanent constitutional body both statements are correct under article 263 the primary function of the interstate council is to speed of javelin perfect how investigate and discuss subjects of common interest between the states or center states perfect how Article 263 the task of the interstate council was with inquiring into and discussing subjects in which state have a common interest in which a landmark case the Supreme Court laid down strict guidelines regarding the misuse of Article 356 1437 प्रश्न আছে ये ड्रिलिंग करूचंती वाला घर पाखरे खड़खड़ 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 करूचंती सत्यजित कड़े आम पूजारी एसआर बोमाई केस इज फॉर आंसर प्रश्न को जिबा हो एसआर बोमाई केस 1994 set strict guidelines and established that the censor rule is subject to judicial review पर प्रश्न को जिबा decisionary power of legislation under article 248 are vested in पॉलिटी क्लास ले मत करनी तो कौन करिया पॉलिटी इंपोर्टेंट ना क्लास करिया पड़ियो पार्लियामेंट इज प्रोग्राम सब प्रश्न को जिबा Article 248 vests decisionary powers matters not emanated in any list exclusively in Parliament. Under Article 249, Parliament can legislate on a state list subject if Rajya Sabha passes a resolution by perfect 2/3. Oh. During a financial emergency under Article 36, the President can issue direction for पीडीएफ दरकार निश्चित निश्चित हम दे पीडीएफ सब दे देवी खाली तुमने पढ़ा दरकार न पढ़ले से तौक जाई मारिक आसी घर पाखे रिड्यूसिंग सैलरीज ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज परफेक्ट आर्टिकल 360 empowers the president to issue directions of the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the union or states perfect article consider statement regarding the tax revenues article 265 provisions of tax levy without authority of law. A corporation tax is a tax levied and collected by the center and assigned to the states entirely. पॉलिटी क्लास रे निद उड़ी जाए शनि उड़िया कथा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला न उड़िले माड़ गोटे बाहर जीवन आओ
2 is incorrect because the corporation tax is levied and collected by the center and proceeds are distributed as per the Finance Commission recommendation. Okay. Rajamannar Committee on Center-State Relation was appointed by the government of ନା ନା ମୁଁ ଅନର୍ସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଲ୍ ଅନର୍ସ ନୁହଁ, ପଲିଟିକାଲ ଅନର୍ସ ନୁହଁ ପିଲା, ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ସବୁ ଅନର୍ସ ମୋତେ। ନାଇଁ ମଜାରେ କହୁଛି ପିଲା, ନା ମୋ କଥା କିଏ ସିରିୟସଲି ନବନି। ତାମିଲନାଡୁ ଇଜ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର। 25 ହେଉଛି ନାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ। ରାଜମନ୍ନାର କମିଟି ଭୁଲିଗଲ। Rajamanagar Committee was appointed by the government of Tamil Nadu in 1969 to examine state-center relations. Administrative tribunals for public service matters are established under 1423 નો પ્રશ્ન એમાં છે। ନା 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 ଏତେ ଆଗକୁ ନିଅ ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। 323 is the perfect answer। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। Article 323A provides for the establishment of administrative tribunals for adjudication of disputes relating to the public service recruitment and conditions. Article 355 places a duty on the union to protect every state against करिया बिल माने पढ़ियो हम बाध्य समझते हमें ना। External aggression and internal disturbances. Perfect. Article 358 states that it is the duty of the union to protect every state against the external aggression. Under Article 358, President may, with the consent of a state government, entrust to that government task. Perfect. I'm going to functions executive to the union. Perfect. Pranam नहीं का pranam. How? Article 250 empowers the president to entrust union executive functions to the state government with their consent. The subject economic and social planning is placed in which list of the 7th schedule? Perfect. I'm going to concurrent list. Economic and social planning as a is a subject enumerated in the concurrent list 3 of the 7th schedule. Article 251 deals with the inconsistency between the laws made by Parliament under Article 249 and 250 and very good laws made by the legislature of the state. Perfect. 251 resolves the inconsistency between laws made by the Parliament under Article 249 and 50 and the laws made by the state legislature giving precedence to Parliament laws. The National Development Council (NDC) aspect of the economic planning was established in 1447 प्रश्न में बचे। Very good। 1447 प्रश्न में बचे। जल्दी से आंसर दे दियो। हाउ 1952 is the perfect answer। ले भारत प्रश्न को जीवा। The National Development Council (NDC) was established on August 6, 1952 to review working of national plans. On Article 262, Parliament enacted which major law for interstate water disputes? Very good. Perfect. जो मैंने interstate water dispute 1956 आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर। Parliament enacted the Interstate Water Disputes Act 1956। परफेक्ट। Article 262 अंडर है ना नहीं। Article 253 empowers the Parliament to make laws for implementing international treaties। 1450 प्रश्न है। पिला माने सबु स्ट्रीम निज भितर हार्ड बुझि पालो। जी जो जिनस पढ़े से सेटा अनुभव करि पारे, जे न पढ़िथिबो ताको लागे सेटा इजी हेतिबो। मो सब्जेक्ट हार्ड माने ता सब्जेक्ट इजी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Article 253 empowers Parliament to make laws for implementing international agreements for the whole or any part of India. Who has the authority to proclaim a national emergency under Article 352? Yes, सम्मान भावना भूल। साइंस जगह कष्ट, आर्ट्स जगह कष्ट। आर्ट्स पिला आर्ट्स कष्ट,
साइंस पिलांग पई साइंस कष्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं सेमिति कहि परिबनी फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी हार्ड नहीं सेमिति नहीं से घोषिया को विरक्ति लगे तुम घोषापाठ आर्ट्स रो घोषापाठ तुम से कथा कहन मु कहबी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कौन केमिकल बॉन्ड केमिकल रिएक्शन मैथमेटिक्स तो कौन माने सूत्र पकई करिवो सेतिर कौन असुविधा अछि सेमिति कहि जो बुझि परछ सब पाठ निज निज जगार कष्ट बुझि परछ ता नाम से पूरा पाठ फिजिक्स ल गुड़ा तुम डिफिकल्ट कहूँ आम जन सार अच्छा माने सार अच्छा सी जमी कौन कहले मंत्र पढ़ला बेला फिजिक्स ल कहते one is correct. 58 suspends article 119 for both external and internal emergency. Statement 2 is incorrect. No, perfect. Okay, which article provides for grants in aid by the union to states? नहीं बुक देखो बुक तुम मैंने बेसिक रु पढ़ी ना देखो तुम मैंने बेसिक रु फिजिक्स रु पढ़ी ना तो जेहेतु तुम बेसिक्स रु पढ़ी ना तुमको डायरेक्ट पढ़ले हार्ड लगे बुझी पड़छ कहना एबिका जो माने सिलेबस आसिलानी सीबीएसई पैटर्न कथा कहूँ गोटे स्टूडेंट्स थिला कहूँ स्पेसिफिक आलोक सर कथा कहूँ केमिस्ट्री पोको सी माने कौन भाई मु बेले भावे भाई कौन कही जाउछंती हेलो आल छाड़ आर्ट्स इजी नुहे पे आर्ट्स इजी नुह तुम कहया इजी आर्ट्स तुम मैंने निजे एक पढ़ुच पर आर्ट्स इजी केमती लगुच तुम 153 प्रश्न अच्छे How the seventh schedule of the constitution divides legislative powers into how many lists? आर्ट्स इजी जे कहूच मु गोटे प्रश्न पचारि कहि दे परिबो लिंग्विस्टिक सबुठ हार्ड लिंग्विस्टिक पेपर सबुठ हार्ड पिलाने मते केही कहि परिबेन जे लिंग्विस्टिक सबुठ इजी लिंग्विस्टिक पेपर सबुठ हार्ड सबुठ हार्ड है लिंग्विस्टिक पेपर थ्री लिस्ट इज द परफेक्ट आंसर प्रश्न को जीवा तो सेवन शेड्यूल डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट which subject is under the concurrent list of the seventh schedule लिंग्विस्टिक कहीं हार्ड ना लिंग्विस्टिक रे तुम हिस्ट्री पढ़िबो जियोग्राफिकली हिस्ट्री पढ़िबो जो जियोग्राफिकल माने को एरिया रे केमतिया लैंग्वेज व्यवहार करा जाउतला भाषा केमती अपभ्रंश है से गुड़ा को पढ़ा होता आ भाषा अपभ्रंश है केमिति भाषा अपभ्रंश माध्यम कौन ध्वनि विज्ञान पढ़ आ कौन मेथोडोलॉजी पढ़ आ कौन सब बहुत प्रकार अच्छे तुम लैंग्वेज भाई मुंड उपर जीव लैंग्वेज In the concurrent list moved by 42nd Amendment, police and public health are in the state list. Perfect. Article 262 empowers the Parliament to adjudicate disputes relating to बहुत hard. बहुत hard. Interstate river waters. तुम इंग्लिश ग्रामर गोटे सेकंड पे बुझी भी पारिबो किंतु ओडिया नॉट इजी पिले माने नॉट इजी First the statement on Article 356 statement based question. So answer दो. Obviously कष्ट ओडिया इजी नहीं ओडिया डिफरेंट माने अदर लैंग्वेज रे ओडिया ग्रामर टा सब हार्ड ओडिया ग्रामर अता पता पाइबन त माने
Only one is the correct answer. English grammar ओडिया इजी ओडिया इजी नो ओडिया में पचारि तो गोटे ग्रामर पचारि केही कहि परिबनि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 is famous related to state autonomy and center state relations is the correct answer. 50 टका छिबा हाउ सरकारी कमिशन recommended that the concurrent list would be used. देखो समस्त पाठ कष्ट लगे यहाँ मन रखियो पे समस्त को जे साइंस पढ़ हे गोटे विरक्ति लगुच कि पाठ है खाली केमिकल घोषी घोषी मुंड खराब है जे ठीक अच्छे जे आर्ट्स पढ़ुव ताक लगे हे खाली मसीहा घोषी घोषी मुंड खराब है मुझे पढ़ी पाठ फाड़ दे बही फाड़ दियो समस्त को निज पाठ कष्ट लगे एंड आर्टिकल 249 रिजर्वेशन पास with राज्यसभा empowering parliament on state list subject remains in force for that. Very good. Not exceeding 1 year. Not exceeding 1 year. माड़ा हवा से कौन कही state list remains in force for not exceeding perfect how which article deals with the imposition of the president's rule due to non-compliance with central directions. सर खाली आर्ट्स से पॉज कर दो गोटे सेकंड आर्ट्स पॉज कर दो पॉज हो गला नो इश्यूज आंसर दे समस्त अरे देख पे समस्त सब पाठ कष्ट कौ पाठ इजी नुहे तुम मैंने पढ़ुच तुम मैंने परिश्रम करुच तुमको इजी लगुच तुम मैंने कहीदौच states that failure conflict with or give effect to central directions can result in president's rule under article 356. Okay, consider statement on emergency provisions. So all-rounder सब सारे फेवरेट स्ट्रीम बुझ पानी कौन कहला 50 प्रश्न आम थे बहुत ठीक अच्छे तटा एथर बहुत ठीक अच्छे प्लान नहीं ओनली 2 सब दीजिए सब ओनली 2 दीजिए माड़ हम ऊपर सब ओनली 2 दीजिए कौन ओनली 2 नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड फॉर द एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट यस इट इज राइट फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months परफेक्ट ठीक अच्छे both statements are correct. Article 352 partially emergency. Article 360 requires 2 month approval. Perfect. What was wrong with Sarkari Commission submitted its comprehensive report on central elections in Sounds video like कर दो अरे ना मु मल्टीप्लाइड कथटा 1988 पढ़ा 50 टका ठीक अच्छे आउ तो सरकारी कमिशन को अपॉइंटेड 1983 1988 रिपोर्ट सबमिट होता आर्टिकल 258 एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू एंट्रस्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट बो बेले बेले कहे तो सतरे पिला मानुच ना मानु सत कहलु मत कौन कही पे कहीं तो मानुना तुम मैंने तुम मानुच मत हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट रिगार्डिंग 7th शेड्यूल लिस्ट कहीं मानुना तुम कहीं जड़े मानुना मैंने सब बोथ ऑप्शन पड़े जाओ सब बोथ ऑप्शन पड़े जाओ
हाउ बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर नहीं बोथ 1 and 2 ठीक तला मु जानी कि कहले तमे संग संग चेंज करला यूनिट स्टडीज हैज द मोस्ट आइटम्स एंड स्टेट लिस्ट खबर्स हाउ पुंची कमिशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं नहीं रे आइडियल से मानु बनाओ जहां को देखि त माने किछि सिखिबो मोटो सिखिया जिनसे किछि नहीं Okay, the Punchi Commission was appointed by the Union government on April 7 under Justice Madan Mohan Punchi. Under Article 354, while a proclamation of emergency is in operation, the President may direct. किछि सिखि परिबने पिले माने खाली जस्ट मजा मस्ती मोर मु मेथोडोलॉजी डिफरेंट यूज करे କିନ୍ତୁ मोर पाठ नाही मेथोडोलॉजी टिक अलग provisions relating to distribution of revenues Article 268 to 279 to be suspended or modified जोटा को माने नै पिले हाउ तबरे आउट क्वेश्चन आसला व्हिच लिस्ट कंटेन्स एग्रीकल्चर एंड पुलिस अंडर द 7th शेड्यूल कोटा भगवान कि कमेंट पिला देखन पूजा करना हमको ब्लॉगिंग चैनल थ्रू कंप्यूटर क्लास रे कंप्यूटर कथा मन पड़ला कंप्यूटर मु 40 नोट बनौतली बा लिखी लिखि हाथ खराब हो चलानी both agriculture and police are subjects enumerated in the state list 2 of the 7th schedule जहाँ मानुच शुणी धन्यवाद धन्यवाद तो मानु समस्त प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 इज द करेक्ट आंसर एंड सुना गोटे मजा कथा सुना पिला देखो मजा कथा सुना यही 4-5 दिन तले बो देह खराब है ठीक अछि मु आसी क्लास रे कहि दिछि जे बो देह भलो नथिला ठीक अछि कि ऑफलाइन स्टूडेंट मोर जानि दिछि ठीक अछि कोड मो घर नंबर पाई मु भी जानि पनी पिला कोड नंबर पाउछि आज आपण देह खराब पड़े ओ कुछ किए रे तू हेची सोदाम पर जे खाली मो देह भलो तो संग कथा because the maximum absolute limit of the president's rule in is 3 years. Article 268 relating to the service tax was inserted by the which constitutional amendment? Perfect, very good. हाउ माडा हो मो परबा माने ठीक सरिला पर माडा हो हाउ दे सारा हम बिच कहबिनी तो कहि जे क्वेश्चन पढिलनी रिटर्न सर्विस टैक्स कहि सर्विस टैक्स 268 कथा कहि वाज इंसर्टेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशनल परे आसीतला 88 मन अछि एजुकेशनल परे आसीतला 88 मन अछि Perfect, very good. It is Constitutional Amendment Act 2003, inserted Article 268 for a service tax. नहीं. On Article 267, the contingency fund of the India is placed at the disposal of whom? Amendment सब गोटे amendment करबा गोटे हिस्ट्री नोट हिसारी जेंती जेंती पॉलिटी रो गोटे नोट करबी आगे जियोटा सारी दे जियो सारी दला परे तार पॉलिटी आनिबा the President of India for protest को जिबा consider statement on the emergency proclamation revocation जियोटा सरीबा हेलानी तो माने मोस्टली पढियाटा क्वेश्चन कारिटारो भलो सीरीज आरंभ होई जियोग्राफी काली जो मानसो करिथिबो पूरा अलग लेवल जियोग्राफी मस्त क्वेश्चन आस्थिला दीटा भूल अछि नीदर 1 और nor 2 माने नहीं परफेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट what second but नहीं good son मु बुझे proclamation of national emergency perfect
It can be revoked by the president at any time. माड़ हम ओनली वन ठीक अच्छी ओनली वन ठीक अच्छी लोकसभा कैनॉट पास रिजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस भूल हम मु भी ऑप्शन भूल पके दी माने आंसर ठीक लिखी सेकंड वन इज करेक्ट सेकंड टू इज इनकरेक्ट बिकॉज लोकसभा कैन पास रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूव किए रे ये हराना कर फोन कर गोटे सेकंड लाइन था पिलान सर मैं कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता हूँ सर क्यों परेशान कर ले आप लोग currently I am not affiliated with any trading company please try to understand मुंडो खराब होता ट्रेडिंग ट्रेडिंग कौन एरा सब खाली ट्रेडिंग चली जेटा कि कौन फोन कर ओके व्हिच आर्टिकल इज द वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स ऑफ दिस नाइ रे ट्रेडिंग ट्रेडिंग कौन ट्रेडिंग की कॉल करतला की ट्रेडिंग के जाने खाली हराना कर 414 क्वेश्चन मत ठीक कर गोटे सेकंड पे मैंने 1472 क्वेश्चन मत फिक्स कर दियो मु वार्ड रे ठीक कर दी ना मन रहूनी आ पछरे 1472 64 डी नुहे इटा 1A हम ओके परफेक्ट है अरे भल पैसा किसी ना रे रोजगार किसी ना कॉलेज छाड़ने गला हो आर्टिकल 248 प्रोग्राम तो सरकारी कमिशन सजेस्टेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर शुड गवर्नर कहि गवर्नमेंट कहि नहीं पीडीएफ देवा टाइम रे मन रहनी पे मैंने तुम टी देखी दो ठीक अच्छे not be used for political patronage and holders should be complete their 5-year tenure normally है ना नहीं okay remember that the governor should be non-political persons of the eminence and normally allowed to complete the 5-year tenure perfect protection under article 53 when a national emergency is in operation the executive power of the union extends to perfect I'm going to giving direction to any state as to the manner in which its executive power is to be exercised है ना नहीं पहले फॉर आर्टिकल 353 extends to the executive power of the union to giving direction to any state as to how its executive power should be exercised during emergency zonal councils are established under the provisions of which act देवी कृष्ण व्यास सुनांती हो 1497 प्रश्न एम अच्छे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है ना इम्प्लीमेंट परफेक्ट प्रश्न को जीवा जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 which part of the constitution deals with the trade commerce and intercourse within India कितने आर्ट्स बंद करते बेलन हे तो 10 मिनट्स हम कौन करि परिबे 10 मिनट्स कूल डाउन पीरियड सेटा ही ऑन करियो part X perfect parthasno jo part X articles 301 to 307 of the constitution deals with the trade commerce and intercourse within the territory of India perfect parthasno jo article 301 of the constitution provides the freedom of trade commerce and intercourse throughout perfect ang territory of India just take a I just discuss the previous question perfect article 260 of the constitution relates to the executive power of the union in relations to नहीं गोटे मॉक टेस्ट तुम बनइबा नेक्स्ट संडे रे मॉक टेस्ट रेडी थी ठीक अच्छे नेक्स्ट संडे रे मॉक टेस्ट समस्त रेडी थी गोटे जियोग्राफी जिते सब पढ़ाई सब गोटे सिलेक्टिव क्वेश्चंस किसी बाहर करी मॉक टेस्ट बने ठीक अच्छे भूल गाड़ी सर मोर गोटे रिक्वेस्ट निश्चिंत
proceed federal jurisdiction of outside India जोटा कुछ ठीक है how Article 260 relates to the jurisdiction of the Union in relation to the territories outside India. Perfect. Consider the statement regarding the zonal councils. They are statutory bodies created by an act of parliament. The Union Home Minister is common chairman of all zonal councils. मॉक टेस्ट मु दे देबी तमानु लिंक दे देबी YouTube रे लाइव आसीबा मॉक टेस्ट तो पकेबा तमानु 30 मिनिट्स टाइम दिया जिवो तमान 30 मिनिट्स रे मॉक टेस्ट फिल अप करबो मॉक टेस्ट लिंक दे देबी माने लिंक दे देबी त माने मॉक टेस्ट जो गूगल रो फॉर्म जानथिबो गूगल फॉर्म नहीं गूगल रो मॉक टेस्ट जो गूगल क्विज रे बने देबी ठीक अच्छे कहीं मु तो आम एप्लिकेशन बनिया एत सहज न आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू लीव इट एक्सेशन एप्लिकेशन भाई कही भाई को भाई कहले टिक ऑफिस फ्री हो गले मु तर बनैबी बट अमेंडमेंट रो गोटे ट्रिक खोज कहतु मत मन रखिए अच्छा पार्ट आउ अमेंडमेंट गुटाक आनी गोटे प्रॉपर गोटे थ्योरी क्लासेस आनिबा प्रोफेशन स्टेट्स कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स द प्रोफेशनल सिस्टम थिबा how legislative relations between the center and the states are outlined in part सत्य जाइतले माछ धरियो सत्यता माछ धरले निश्चित एग्जांपल बनानी अमेंडमेंट गुडा होने नहीं ठीक है अमेंडमेंट टारगेट रहिला नेक्स्ट टारगेट अमेंडमेंट हो ठीक है exercise versions of articles 245 to 255 of the constitution deals with the legislative relations between the union and state. Perfect. Administrative relations between the center and the states are enshrined in go to second pillar. ठीक है ओके आसी जल्दी छाड़ दवा अल्प क्वेश्चन जल्दी छाड़ दवा घरे डाकिले खाइबा को नहीं जावाई बापा पाखु हाँ जाऊ चल जाऊँ हाँ chapter 2 part of exercise program so pato प्रश्न article 256 mandates the executive power of every state shall ensure compliance with आसंत सर सार को डरे दिले
ଏଇଟା ରହିଲା laws made by parliament is the program of प्रश्न को जीवा cost statement on the administrative relations 1450 नंबर प्रश्न लेमा छै समझ 100 सेकंड स्किप कर दो 120 सेकंड स्किप पे लेवाने प्लीज perfect both 1 and 2 is the perfect answer पे लेवाने perfect 272 2 and 252 it's a 258 respectively okay circular comes and recommended that article 356 should be used पढ़िया टाइम दिन से अच्छा 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 आपन को सारा असली की नहीं बू डाकिले आम सार न आम एचओडी आम घर एचओडी ओनली एज मेजर ऑफ लास्ट रिसर्च Circular Commission strongly recommended that the Article 356 should be used very sparingly in extreme cases such as last resort. Which landmark Supreme Court case established the President's rule is subject to judicial review? Charges 20% ହେଇଗଲା हो नो इश्यूज ठीक ଅଛି होम अफेयर्स माने मम्मी ठीक सत्यजीत ठीक वेरी गुड बोंकर माड़ अलग प्रकार हो सर मो केस प्रोग्राम प्रश्न को जीवा the written recommendation of the cabinet for proclaiming national emergency was introduced by very good perfect I am going to say 44th amendment. The expression armed rebellion replaced internal disturbances in Article 352 by very good 44 माड़ा हबो 44th Amendment Act 1978 replaced the internal disturbance with armed rebellion as a ground of national emergency. Perfect. Okay, statement question on parliamentary approval for emergencies. Very good. Na only one game thi hobo dita correct कहीं the president rule proclamation requires a simple majority in parliament. Yes, parliamentary भी majority दरकार तो को इमरजेंसी कथा कहि देखि परछ तो बिकॉज सिंपल मेजॉरिटी को इमरजेंसी कथा कहि देख नेशनल फॉर इमरजेंसीज मोस्टली आमे कहूचे नेशनल इमरजेंसी कहूचे हां नहीं स्पेसिफिक मेजॉरिटी दरकार नेशनल इमरजेंसी स्पेसिफिक मेजॉरिटी दरकार नेशनल परा जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति नेशनल इमरजेंसी नीड्स a special majority while the president rules needs a simple majority. Once approved by parliament, a financial emergency under article 360 continues until state emergency by simple majority से कथा हम कहूछु सनी very good revoked by the president. Taxes levied and collected by the union but assigned to the states are covered under गाड़ी सुनिबो सब 270 सब गाड़ी सुनिबो 270 covers taxes levied and collected by the union and distributed between the union and state जोटा को distribution कथा कहै how many original zonal councils were established under the states reorganization act 1957 14 प्रश्न अछि पुणी भूली गला नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न चारटा दिग
तापर गोटे सेंट्रल द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर पर आम कहे 1971 वेरी गुड हाउ the statement based question was the zonal councils how speed of javelin गाड़ी पड़िलानी very good सत्यजीत perfect both 1 and 2 है ना नहीं 2 the recommendation of the president of governor matters of perfect how very good procedure only not mandatory to invalidate laws is absent if absent okay article 288 relates to exemption from the taxation by the states in respect of perfect water electricity stored produced generated by the interstate river authorities perfect which article exempts the property of the union from the state taxation very good 285 is the perfect answer everyone which article exempts the property and income of state from union taxation 289 गाड़ी खाइबो समझते 285 no 289 article 289 exempts the property and income of the state of from union perfect how financial relations between the central and the state are outlined in part XII chapter 1500 last question session perfect chapter 1 is the perfect answer again thank you so much for service session 1 उत्तर जानी next class देखा हबो नुआ किछि टॉपिक जो द्वारा इलेक्शन कमिशन एंड एक्सेट्रा ऊपर डिस्कस करबा again thank you so much for service session 1 उत्तर जानी शुभ अपराह्न पुणी देखा नेक्स्ट क्लास